बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेट मी जस्ट समराइज इट, देन आई विल टॉक अबाउट केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कुछ और प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करे, लेकिन कुछ इस तरह हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, सच एज पेंक्रियाज सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, साथ बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, मेटाबॉलिक हार्मोन्स सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन भी प्रोड्यूस करता है। इस तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वो HCl प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ साथ जो है गैस्ट्रिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये हार्मोन के अलावा जो और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो ये टारगेट तक या तो स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं, और जैसे पेंक्रियाज जो है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम तक अपने डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट डिलीवर करता है। इस तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू स्टमक तक अपने जो है HCl जो है डिलीवर करता है। लेकिन हार्मोन जो है चाहे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करे या एंडोक्राइन ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करे, वो टारगेट तक ब्लड या लिम्फ के थ्रू ही पहुंचते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है ज़रूरी नहीं कि उसमें डक्ट्स हों, कुछ इस तरह भी हैं जिस तरह के यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल जो है उनके डक्ट नहीं है, वो डायरेक्टली सरफेस पे जो है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमेशा सिर्फ हार्मोन ही प्रोड्यूस करते हैं, कुछ और प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और हार्मोन को हमेशा डिलीवर करते हैं अपने टारगेट तक ब्लड या लिम्फ के थ्रू। सो लेट्स कम इन टॉक अबाउट chemical nature of hormones. Chemically, hormones are classified into three main types. The first type is steroid hormone. Second one is derivatives of amino acid tyrosine, and third type is peptide and proteins. Steroid hormones raw material क्या है जिससे ये प्रोड्यूस होते हैं? They are produced from cholesterol. कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ जो है या वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस हो जाते हैं। व्हाट आर देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल स्टेरॉइड हार्मोन इज that they consist of 4 complex rings of carbon and hydrogen atoms. This characteristic is same in all. This characteristic is shared by all steroid hormones, that they consist of 4 complex rings of carbon and hydrogen atoms. Now, what is the difference between different steroid hormones? I mean to say ये characteristic तो चलो same है, तो इनमें differences क्या हैं? Steroid hormones different from each other on the basis of number of atoms attached to these rings. The third characteristic इनकी क्या है? Third characteristic ये है कि they cannot stored when they synthesize, immediately they release from the cell. Mean to say कि स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं वो जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं वो स्टोर नहीं हो सकते हैं, वो इमीडिएटली सेल से रिलीज हो जाते हैं। वाई दे कैन नॉट स्टोर इन द सेल? बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल, एंड एनी प्रोडक्ट विच इज लिपिड सॉल्युबल इट इमीडिएटली लीव द सेल। So then a question arises that if they are produced and immediately released into the blood, then of course in the blood their concentration will always remain high. Then what is the mechanism which control their secretion or their concentration in the blood? So I will explain the mechanism, that what is the mechanism which control their secretion or their synthesis or their concentration in the blood, but after 1 minute or after few minutes. So let me first tell you what are the sources of secretion, mean to say where these steroid hormones are produced, and what are the structures which secrete them. So there are 4 main sources which produce and secrete steroid hormones. The first main source of steroid hormone synthesis is adrenal cortex. The adrenal cortex produce and secrete 2 important steroid hormones. One is called aldosterone, and second one is called cortisol. These are the 2 main steroid hormones which are produced and secreted by adrenal cortex. The second source is ovaries.
Ovaries produce two important steroid hormones. Number one, estrogen, plus second one, progesterone. The third source is placenta. Placenta is an anatomical connection, joint connection between fetus and mother, through which the fetus get nutrition from the mother. So placenta is another source which produce and secrete steroid hormone. What are those hormones secreted by placenta? The placenta also produce and secrete estrogen and progesterone. The third source from where steroid hormones are released is testes. Testes produce and secrete testosterone hormone. Estrogen and progesterone are female sex hormones and testosterone is male sex हार्मोन. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं और टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं. I will tell later on why they are called female sex hormone and why it is called male sex hormone when I will talk in detail about the hormones of ovaries and hormones of testes. So let me discuss that what is the mechanism which control the concentration of steroid hormones in the blood or their synthesis. Is I talked कि अगर ये continuously produce होते हैं और continuously release होते हैं तो of course इनकी concentration जो है ब्लड में हमेशा हाई रहेगी और हाई रहेगी. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म व्हिच कंट्रोल देयर कंसंट्रेशन इन द ब्लड. यू नो दैट द सिक्रीशन ऑफ एवरी हार्मोन नीड सम स्टिमुलस. हर हार्मोन की सिक्रीशन के लिए स्टिमुलस की ज़रूरत होती है. सो लेट्स सपोज दीज आर द सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन hormone, and of course for their synthesis and for secretion of testosterone these cells also need a stimulus. So from where the stimulus come? The stimulus come from anterior pituitary in the form of LH hormone. Anterior pituitary जो है LH हार्मोन को सिक्रिएट करता है और LH हार्मोन then enter into the blood and through the blood it reaches to the testes, and in the testes there are specific cells which have their receptor. So the LH hormone bind with its receptor. As soon the LH hormone bind with its receptor, these cells then stimulate and start to produce testosterone hormone. After their production, their synthesis, immediately they release the testosterone hormone into the blood. And of course if continuously LH is releasing, so of course continuously testosterone will be produced and will release into the blood. So इस तरह टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है ब्लड में. जब टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है then this testosterone act on through the blood, it reach to the anterior pituitary, and on the cells of anterior pituitary which produce and secrete LH hormone, there is receptor for testosterone hormone. This testosterone hormone come and it bind with its receptor. This testosterone it has negative effect, and it has inhibitory effect on LH producing cell. So as soon as it bind with its receptor, it inhibit this LH production and secretion from anterior pituitary. तो LH की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? LH प्रोडक्शन जो है जब टेस्टोस्टेरोन इनके साथ बाइंड कर जाता है तो LH की प्रोडक्शन जो है क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है. जब LH की प्रोडक्शन जो है इनहिबिट हो जाती है, सो ऑफ कोर्स नाउ देयर इज नो स्टिमुलस फॉर व्हाट? फॉर टेस्टोस्टेरोन synthesis and secretion. Then as a result what happen? Testosterone start to decrease in the blood. How it is decrease in the blood I will tell after 1 minute, but let me tell you what is the name of this mechanism. This mechanism is called negative feedback mechanism, usually denoted by negative signs in various book. इसको नेगेटिव फीडबैक क्यों कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक इसको इसलिए कहते हैं, इस तरह के आमतौर पर हम कहते हैं कि जब जो लोग गरीब होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है
और जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं इस गुर्बत के वक़्त में, तो जब इनके पास पैसा आ जाता है या अमीर हो जाते हैं तो इनके पर निकल आते हैं और वो फिर जाके उन लोगों के साथ जो है दुश्मनी करते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिन्होंने उनके साथ बुरे वक्त में साथ दिया था। तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक कहते हैं रिस्पांस को, नेगेटिव कहते हैं नेगेटिव रिस्पांस को। देखिए, जब इनकी टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम थी तो एलएच ने किया क्या, एलएच ने इन सेल्स पे एक्ट किया और टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को किया क्या, इंक्रीज किया ब्लड में। टेस्टोस्टेरोन ने इन रिस्पांस किया क्या, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन जब हाई होगी इसने इन सेल्स को नेगेटिव फीडबैक दिया, नेगेटिव रिस्पांस दिया। क्या नेगेटिव रिस्पांस दिया, उन्होंने जाके एलएच की सिक्रीशन ही क्या कर दी, इनहिबिट कर दी। कब, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो एलएच की सिक्रीशन इनहिबिट हो गई। जब एलएच की सिक्रीशन इनहिबिट हुई उल्टा टेस्टोस्टेरोन जो है दोबारा कम हो गया। मैं क्लियर, आई थिंक सो। दिस रिस्पांस कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। सो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द कंसंट्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन इज कंट्रोल इन द ब्लड। कैसे, अगेन एलएच हार्मोन रिलीज हो जाता है, एलएच हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सेल पे एक्ट कर लेता है, इन रिस्पांस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस इन रिलीज। तो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये उल्टा क्या कर लेता है, ये एलएच प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उन पर एक्ट कर लेता है, उन पर इनका इनहिबिटरी इफेक्ट है, तो एलएच की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और सिक्रेशन भी स्टॉप हो जाती है। तो देयर इज नाउ नो स्टिमुलस फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और फॉर एनी अदर steroid hormone production. So no further steroid hormone synthesize and of course will not secrete. तो जो हार्मोन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं ब्लड में उनके साथ क्या हो जाता है, उनकी कंसंट्रेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्लड में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट हो जाती है, जब हार्मोन रिलीज हो जाते हैं थ्रू ब्लड यूजुअली टारगेट तक पहुंच जाते हैं। जब टारगेट तक पहुंच जाते हैं अपना एक्शन शो करने के बाद या तो सर्टेन एंजाइम उनकी डिग्रेडेशन कर लेते हैं और या जो है ये ब्लड स्ट्रीम की थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है किडनी तक पहुंच जाते हैं और किडनी में वहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं और यूरिन के साथ जो है बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इस तरह उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो अगेन दिस रिसेप्टर बिकम फ्री फ्रॉम द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। तो जब इनहिबिटरी इफेक्ट जो है, नाउ देयर इज नो स्टेरॉयड हार्मोन, देयर इज नो इनहिबिशन, सो अगेन LH start to produce and it start to act again on these cell and they start to produce and release again testosterone. So इस तरह सिलसिला जारी रहता है। जब कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाती है तो ये जाके उस सोर्स को जो है इनहिबिट कर लेते हैं जो सोर्स इसको स्टिमुलेट करता है इसकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को। इस तरह इनकी कंसंट्रेशन बैलेंस या मेंटेन रहती है। होप all of you got this point. So now let's come to the next hormone, derivatives of amino acid tyrosine. As the name indicate that these hormones are produced from amino acid tyrosine. amino acid tyrosine में structural changes हो जाते हैं जिसकी वजह से इनसे 4 different types के hormones बनते हैं. What are those 4 different types of hormones which are synthesized from amino acid tyrosine? So the first 2 hormones are epinephrine plus norepinephrine. It may also called adrenaline and noradrenaline. And their source of secretion is adrenal medulla. They also called catecholamines. Epinephrine and norepinephrine or adrenaline and noradrenaline, they are also called catecholamines. When I will talk about adrenal medulla hormones, then I will explain why they are called catecholamines. And another 2 hormones which are synthesized from amino acid tyrosine are, number 1 is called thyroxine. Thyroxine may also called tetraiodothyronine. And it may also tetraiodothyronine, okay, I will tell you later on. And another one is called triiodothyronine.
The thyroxine or tetraiodothyronine, also called T4, and triiodothyronine, also called T3. Why it is called T4 and why it is called T3? It is called T4 because T4 hormone consists, or thyroxine consists of two tyrosine amino acids, consist of two tyrosine plus four iodine atoms. Attach two iodine atoms attach with one tyrosine and two attach with another tyrosine, and both tyrosine are connected with each other with peptide bonds. So therefore they are called tetraiodothyronine, and triiodothyronine consists of two tyrosine amino acid and three iodine. With one tyrosine attach one iodine and with another tyrosine attach two iodine. So therefore they are called T3 because T3 contain two tyrosine and three iodine atoms, while T4 contain two tyrosine amino acid and four iodine atoms. Therefore they are called T4 and therefore they are called T3. Now these epinephrine and norepinephrine, they can, this is very important point, they can stored. Epinephrine and norepinephrine can stored inside cells, while thyroxine and triiodothyronine, they cannot store. Same like steroid hormone, they are also lipid soluble. As soon as they are synthesized, they are released from the cell, so they cannot stored. It means they can cross the cell membrane. ये cell membrane को cross कर सकते हैं. अगर cell membrane को ये cross करते हैं, ये भी if they are lipid soluble and if also steroid hormone are lipid soluble, it means they can enter. If they leave the cell, it means they can also enter into the cell. So hence their receptors are not present on the cell membrane. Their receptors are present either in the cytoplasm or इनसाइड द न्यूक्लियस, या तो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को अगर क्रॉस कर सकते हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं. तो इनके रिसेप्टर जो है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. व्हेन आई विल डिस्कस mechanism of hormone action, then I will show that where are their receptors. However, so far it is sufficient that their receptors are not present in the cell membrane. Their receptors are present inside the cell. So receptors present inside the cell, and their receptors also present inside cell. Receptors inside the cell. Okay. Now come to the protein, peptide and protein hormones. As the name indicates, these hormones consist of amino acids. ये amino acid पे consist होते हैं. Polymers of amino acid होता है. Most hormones in our body are peptide and protein. हमारे बॉडी में मोस्टली जो हार्मोन्स हैं वो पेप्टाइड है या प्रोटीन होते हैं, और देयर डेरिवेटिव्स या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं. देयर डेरिवेटिव्स मीन यूजुअली जब प्रोटीन हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं तो ये लार्ज एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड पे कंसिस्ट होता है. उससे फिर कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो क्लीव हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, और एक जो है एक्टिव प्रोटीन रह जाता है. उसको फिर हम कहते हैं कि दिस नाउ एक्टिव हार्मोन. इसलिए इसको कुछ को कहते हैं कि दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन, कि लार्ज प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ अमीनो एसिड उससे क्लीव हो जाते हैं, फिर जो है जो पार्ट रह जाता है उसको फिर एक्टिव हार्मोन कहते हैं. Now, what are their example? Some hormones are peptide, and some are polypeptide in nature, and some are protein hormones. So, what are the examples of peptide hormones? The examples of peptide hormones include ADH plus oxytocin. ADH also called vasopressin.
and oxytocin. What is called vasopressin is, ADH play a major role in reabsorption of water from the collecting ducts, but it is called vasopressin. Vaso means vessel, pressin means press, because it also causes vasoconstriction. Therefore, ADH also called vasopressin. And their size, ADH and oxytocin, they consist of 9 amino acids. Both of them consist of 9 amino acids. And from where they are released, they are secreted by posterior pituitary. ADH and oxytocin secreted by posterior pituitary. And example of polypeptide hormone include insulin plus glucagon secreted by pancreas, and parathyroid secreted by parathyroid gland. And examples of protein hormone include example growth hormone plus prolactin. Now it is important to mention how you will know that what are the protein hormones and what are the peptide hormones. You don't need to remember. All these hormones which I mentioned here, aldosterone के अलावा aldosterone, cortisol, estrogen, progesterone, testosterone, thyroxine, triiodothyronine, epinephrine, norepinephrine और adrenaline, noradrenaline, almost और जितने जो हार्मोन्स हैं वो या पेप्टाइड हैं या जो हैं प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड मोस्टली, क्योंकि कुछ बुक्स में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को भी हार्मोन कंसीडर करते हैं, बट ट्रेडिशनली नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट अ हार्मोन. सो इसलिए एक्सेप्शनल केस के अलावा मोस्टली जितने जो बाकी जो हार्मोन्स हैं वो क्या है, पेप्टाइड है या पॉलीपेप्टाइड है या प्रोटीन इन नेचर है. सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर, जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये जितने जो हार्मोन्स हैं इनके अलावा बाकी जो है प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स हैं. हाँ, साइज के बारे में मुख्तलिफ के पेप्टाइड के जो जितने जो पेप्टाइड हार्मोन हैं उनका साइज कितना अमीनो एसिड पे कंसिस्ट करता है और पॉलीपेप्टाइड का साइज कितना अमीनो एसिड पे कंसिस्ट करता है या प्रोटीन जो हार्मोन है उनका साइज कितने पे कंसिस्ट करता है, मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं. अकॉर्डिंग टू गाइटन मेडिकल फिजियोलॉजी बुक, जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड साइज, पेप्टाइड हार्मोन का जो साइज है फ्रॉम 3 अमीनो एसिड टू 49 अमीनो एसिड तक रेंज है. एंड जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, इनका साइज जो है ये 50 से 99 अमीनो एसिड तक होता है. एंड प्रोटीन जो हार्मोन है इनका साइज 100 से 200 अमीनो एसिड तक उसका रेंज है. Okay, so this is all about peptide and protein hormone. Now just me tell you one important point, that what was the first hormone that was discovered. First discovered hormone was secretin. सबसे पहले हार्मोन जो है सेक्रेटिन जो है डिस्कवर हुआ था. एंड व्हाई, जस्ट अनदर लास्ट पॉइंट, व्हाई हार्मोन्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. एक्चुअली जब 1902 में ये सेक्रेटिन हार्मोन डिस्कवर हुआ, ये कैसे डिस्कवर हुआ, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्यूडेनम से जो है एक्सट्रैक्ट लिया, कुछ फ्लूइड ले लिया और उससे जो है इस सेक्रेटिन हार्मोन को जो है उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया. जब इस हार्मोन को जब उन्होंने ब्लड में इंजेक्ट कर लिया तो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, जो इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है या सारी जो पेंक्रियाटिक जूस है, तो उन्होंने देख लिया कि पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन जो है इंक्रीज़ हो गई, पेंक्रियाटिक एंजाइम हो गए तो उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ हो गई. तो मिनटों से
उनकी पेंक्रियाटिक सिक्रीशन एनहांस हो गई, एक्साइट हो गया, तो हार्मोन का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है टू ब्रिंग इन मोशन, टू एक्साइट समथिंग. दैट इज व्हाई दे गिव the name hormones. So why hormones are called hormone? Because initially when they were discovered, the scientists found that secretin hormone excite or stimulate the secretion of gastric juice. That's why they call them hormones. So class finished. In next lecture I will talk about mechanism of action of hormone. के प्रोटीन हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो क्या कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं सेल के अंदर, और पेप्टाइड हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन एंड थायरॉक्सिन वगैरह जो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो कैसे जो है ये सिग्नलिंग जो है इनिशिएट करते हैं और क्या प्रोडक्ट इसके रिजल्ट में बनते हैं. आप लोगों की तो बुक में तो नहीं है, आई नो, हार्मोन सिग्नलिंग मैकेनिज्म या एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, लेकिन फेडरल बुक में है. देयरफॉर आई विल डिस्कस इट ब्रीफली. क्लास फिनिश.